Dear students, today I am going to start a new chapter number 15, quadrilaterals. What do you mean by quadrilaterals? Area enclosed by four line segments is called a quadrilateral. Suppose four line segments are this, then A, B, C, D. Area enclosed by AB, AD, DC and BC means this portion is called a quadrilateral. Area enclosed by four line segments is called a quadrilateral. In a quadrilateral, four sides as AB, BC, CD and AD, and four angles: angle A, angle B, angle C and angle D, and four vertices as A, B, C and D. Means a quadrilateral has four sides, four angles and four vertices. And there are some kinds of quadrilateral as rectangle, square, parallelogram, rhombus, trapezium and kite. These are some kinds of a quadrilateral. Now here we will prove that the sum of interior angles of a quadrilateral is 360 डिग्री. अभी हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ रहे थे पॉलीगॉन में कि किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का सम कैसे निकालते हैं. तो क्वाड्रिलेटरल में फोर साइड होती है, n = 4. तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स अगर निकालेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल then it is equal to 2n minus 4 into 90 degree, or 2 into 4 minus 4 into 90 degree means 4 into 90 degree, and it is equal to 360. But how can you prove it? लेकिन अगर आपको दे दिया जाए इसे प्रूव करने के लिए तो कैसे प्रूव करेंगे? Look here, the process, how you can prove it. Let ABCD is a quadrilateral. Let A, B, C and D is a quadrilateral, and you have to prove angle A plus angle B plus angle C plus angle D equal to 360 degree. Let ABCD is a quadrilateral. Then we have to prove
plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360 degree. Some construction. At first join AC or BD. हम AC को या BD किसी एक को ज्वाइन कर देंगे. Suppose this is angle 1 and this is 2. This angle is 3 and this angle is 4. Join AC. Now prove. In triangle ABC, we know that sum of interior angles of a triangle is 180 degree. हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है. तो we can write angle B plus angle 1 plus angle 3 is equal to 180 degree. Similarly, in triangle ADC, angle 2 plus angle D plus angle 4 is equal to 180 degree. इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड के साथ और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ. तो वी कैन राइट एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री. नाउ एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल 1 एंड 2. यहां से फिगर से देखिए 1 और 2 को अगर ऐड करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल A और 3 4 को ऐड करेंगे तो इसको लिख सकते हैं एंगल C इज इक्वल टू 360 डिग्री. R एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री. तो ऐसे हम लोगों ने प्रूव कर लिया कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री. किसी भी क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम हर कंडीशन में, सभी कंडीशन में ओनली 360 डिग्री ही होता है. नो मोर देन 360 एंड नो लेस देन 360 डिग्री. सो I am going to solve some problem of exercise 15. Question number 5. The angles of a quadrilateral are in ratio 3, 5, 7, 9. Find the measure of each these angles. Question number 5 here. Read this question carefully and I think you can solve it. Question number 5. Let the angles be 3x, 5x, 7x and 9x. Then we know that sum of interior angles of a triangle angles of a quadrilateral, not triangle, of a quadrilateral
is always equal to 360. So 3x plus 5x plus 7x plus 9x is equal to 360. 3, 5, 8, 8, 7, 50 and 9, 25x. 25x is equal to 360. No, 24. Therefore, x equal to 360 degree upon 24. X equal to 13. Therefore, 3x equal to 3 into 50 degree. I have written on 50 degree. 3 into 15. 45 degree. 5x. 5 into 15. 75 degree. 7x. 7 into 50 degree. 105 degree. 9x. 9 into 50 degree is equal to 135 degree. And if you add it, you will get 360. Here. So, our answer is correct. Now, question number 9, and I think you may solve other questions, so I will solve your question number 9. In the adjacent figure, the bisectors of A and B meet in a point P. Angle C equal to 100 degree and angle AD equal to 60 degree. Then find the measure of APB. AD, CD, and the bisector of A means this angle is equal to this angle, and also bisector of B means this angle is equal to this angle. Meet in P, and angle D equal to 60 degree, and angle C equal to 100 degree. Then you have to find the value of angle APB. You have to find the value of angle APB is equal to what? Question number 9. Question number 9. We know suppose this angle is 1 and 2. We know that angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360 degree. Or angle A plus angle B is equal to 360 minus 60 degree plus 100 degree plus 60 degree. Means AB निकालने के लिए C plus D ऐड करके 360 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 360 डिग्री minus 160 degree. It is equal to 200. And half angle A plus
angle B is equal to half 200 is equal to 100 मीन्स A और B का हाफ निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। और ये हाफ एंगल A और हाफ एंगल B को हम 1 और 2 कर रहे हैं। हाफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 100 डिग्री। इन ट्रायंगल APB एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल APB is equal to 180 degree. The sum of interior angles of a triangle is 180 degree. So it is equal to 100 degree and plus APB is equal to 180 degree. Therefore, angle APB is equal to 180 degree minus 100 degree. It is equal to 80. That is your answer. Means angle APB equal to 80 degree. And I hope you can solve other question of this exercise. And if you have any problem, then you may ask me. Thank you.